Hello, Matujem, and you're watching Morning Pulse on Hornbill TV. As the world stood still as the U.S. attacked Venezuela and captured its president Nicolas Maduro and his wife, residents of Mar, a town near Venezuela's capital Caracas, were left homeless or with damaged homes after a U.S. military operation early Saturday, January 4th, in which President Nicolas Maduro was detained, they told Reuters. Jonathan Malura, a 50-year-old motorcycle taxi driver, and his neighbor Angel Alvarez, a young street vendor, said on Sunday that they had woken the day before to the sound of explosions in the community in La Guaira state, about 31 kilometers, 19 miles north of Caracas. Here's what they had to say. We decided to get up, and we saw the whole mess. We'd never been through this in this country. Then we heard the explosions, something I wouldn't wish on anyone, ever. And suddenly everything started blowing up. Sounds, horrible bombing. We started evacuating, running everywhere, trying to get as far out of the area as we could. When we came back, that's when we saw all the damage you can see here. Those were, I don't know, shrapnel. Something like that they say, a bomber with shrapnel, and all the damage it caused. We're alive by a miracle, really, because those are aggressive weapons. I don't agree with this. No matter what happened, whatever it was, look at everything that happened there, inside. Over on that side too, and in the back as well, all of that, we have to be aware, we have to have principles. Now I'm hoping for a quick response from the government to help my family, my children, because they very nearly killed my kids here, you know. My kids were almost killed. Up there were families too. 2 elderly women died because of these acts that never should have happened. Because we aren't to blame for what happens in the world. They have their problems and we have ours. Now look at all this chaos. I don't agree with this, gentlemen. Now my children are left displaced. Every day, since that day, they cry and cry. My mother-in-law cries and cries. My kids say, "Dad, I lost my home," and that makes me, you know. Because they're children just starting out in life. I mean, someone like me, I've lived my life, I already know how things are, but what's their fault in all this? What's the people's fault? The women who died here, none of this was their fault. We're not to blame for other people's problems. Even if it was an accident, fine, but people who didn't deserve to pay ended up paying. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu on Sunday said that guidelines issued by the Director General of Civil Aviation prohibiting the use of power banks inside aircrafts are aimed at ensuring passengers and flight safety. Whenever DGCA issues guidelines or rules, it keeps the safety of the people and the aircraft in mind. Whatever it does, it carries out thorough search and consultation, and most of it comes from the international civil aviation organizations, which consults stakeholders across the world. Once they decide on a certain rule or regulation, it is important for us to follow it so that we maintain safety, and it is. In that regard, we are doing it, the minister told ANI. Speaking on a report submitted on the Indigo disruptions, Naidu said the inquiry committee report has been received and that an in-depth analysis and fact checks are currently being conducted by the DGCA. Launching the PJP said wall painting campaign in Guwahati, Assam Chief Minister said that the PJP is ready for this election, hinting out that the Congress party CM Sarma alleged that horse trading and sale of tickets for at least 23 constituencies is already underway. In the Congress party, ticket is being auctioned for as much as 3 to 5 crore. Leaders have already begun collecting money while promising tickets to individuals, further calling it the misfortune of the Miyas in Assam. CM Sarma alleged that when elections come, Congress party asks votes and money to Miyas, and when the Miyas are in trouble, Congress is nowhere to be seen. Even today, there is an eviction drive going on in Tezpur. No Congress leader is making noise for them, he said. Bharatiya Janata Party 26 নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সাজু হৈছে। আজি 5 জানুৱাৰী আজিৰ পৰা আমি ৱাল লিখন বা দেৱালত বিজেপিৰ প্ৰতীক চিহ্ন অংকন এই কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, আমাৰ ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ আহ্বায়ক প্ৰদান বৰুৱা আৰু মই, আমাৰ দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা, আমি সকলোৱে আজি ৱালত অংকন কৰি এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলোঁ। গোটেই অসমতে আজি আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এই অভিযানৰ একেলগে আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এই ৱাল লিখন আমি কমপ্লিট কৰিম। কেনে ধৰণৰ কংগ্ৰেছে প্ৰথম তেওঁলোকে এটা টকা সংগ্ৰহ কৰি আছে,
3 কোটিৰ পৰা 5 কোটি টকালৈ আৰু যাৰ অভিযোগ আপোনালোকে কেইটামান দিনৰ পিছত খোলাখুলিকৈ পাব নেতাসকলে ঘৰত বিয়া পাতিবৰ কাৰণেও টকা সংগ্ৰহ কৰি আছে যে ভাই আপোনালোকক আমি টিকট দিম আপোনালোকে মোক এতিয়া এডভান্স দিয়ক এইটোও চলি আছে কিন্তু কোন কেইটা সমষ্টিত চলি আছে 22ৰ পৰা 23টা আমাৰ মিয়া সমাজৰ দুৰ্ভাগ্য যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক ভোটো দিব লাগে টকাও দিব লাগে আপোনালোকে বুজি পাব তেওঁলোকৰ দুৰ্ভাগ্য ভোটো দিব আৰু টকাও দিব আৰু এভিকশ্যনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ দলে সহায়ো নকৰে আজিও তেজপুৰত এভিকশ্যন আছে কংগ্ৰেছ দলেতো সহায় নকৰে আজি তেজপুৰত আমি 5,000 বিঘা মাটি এভিকশ্যন কৰিম তো কংগ্ৰেছৰ মিয়া সমাজৰ মই দুৰ্ভাগ্য বুলিয়ে ক'ম যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক টকাও দিব লাগিব ভোটো দিব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছ তেওঁলোকৰ বিপদৰ সময়তো তেওঁলোকৰ লগত নাথাকে Further responding to allegations by leader of the opposition Debrata Saikia, who alleged that the PJP is planning to add 5,000 to 10,000 names at the last moment in each constituency, CM Sama rebuked it by saying that full responsibility of the voters list lies with the ECI and that PJP have no say in it. If the Congress thinks we will add or remove 10,000 votes, why don't they file a complaint? Let them submit from Form 6. There are 3 forms, Form 6, Form 7 and Form 8. If you do not submit the forms and only try to fight through news portals and TV, you will not win the battle, Sama said. ভোটাৰ তালিকা নিৰ্বাচনী আয়োগে প্ৰস্তুত কৰে তাত বিজেপিৰ কোনো কমেন্ট নাই আমি নিকা এখন ভোটাৰ তালিকা হোৱাটো বিচাৰো কৰবাত ভুল থাকিলে ইলেকশ্যন কমিছনে শুধৰাব লাগে আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব নিৰ্বাচনী আয়োগৰ তাত আমাৰ কোনো কমেন্ট নাই আমিও কমপ্লেইন দিম 22 জানুৱাৰীলৈকে কমপ্লেইন দিয়াৰ সময় আছে বহুত জায়গাত আমাৰ নজৰতো আছে যে এইজন মানুহ ঢুকাইছে নামটো ভোটাৰ লিষ্টত আছে এইজন মানুহ কেৰালাত কাম কৰি আছে অসমৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে এইজন মানুহ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে বিদেশী বুলি কৈছে ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে গতিকে এভিকশ্যন হোৱা জায়গাত তেওঁৰ এতিয়া ঘৰ নাই কিন্তু তেওঁৰ নামটো ভোটাৰ তালিকাত আছে গতিকে বিজেপিয়েও ভোটাৰ তালিকাত বিসংগতি দৰ্শাই 22 জানুৱাৰী আগতে আমিও অভিযোগ দিম কিন্তু সেইটো নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওপৰত অনাস্থা নহয় নিয়মে যে আমাৰ খচৰাত ভুল থাকিবই আৰু ভুল সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন ফ্ৰম 6 ফ্ৰম 7 ফ্ৰম 8 গতিকে এইটো বাতৰি কাকত আৰু টিভিত শুদ্ধ নহ'ব ফৰ্ম 6 দিব লাগিব ফৰ্ম 7 দিব লাগিব ফৰ্ম 8 দিব লাগিব তেতিয়াহে শুদ্ধ হ'ব কংগ্ৰেছৰ এটা অভিযোগ যে 10,000 কে যি ভোট আছে কংগ্ৰেছক দিবলগীয়াখিনি কৰ্তন আৰু বিজেপিৰ তেওঁলোকে কমপ্লেইন দিয়ক যিখিনি তেওঁলোকে ভাবিছে আমি কৰ্তন কৰিছোঁ তেওঁলোকে ফৰ্ম 6 দি দিয়ক যে সোমাব লাগে এইটোতো খোলা কিতাপ নহয় 3খন ফৰ্ম আছে আপোনালোকে জানে নাজানে মই ক'ব নোৱাৰো কালিৰ পৰা নিউজত কৰি আছে এইটো নিউজেদি কেতিয়াও ঠিক নহয় ফৰ্ম 6 ফৰ্ম 7 ফৰ্ম 8 ইভেন টাইটেলৰো যদি ভুল আছে হিমন্ত বিশ্বাস শৰ্মা হৈ আছে তাৰো কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম 6 মই দিব পাৰোঁ গতিকে ফৰ্ম নিদি অকল যদি পোৰ্টেল আৰু টিভিৰ জৰিয়তে যুদ্ধ জিকিব খোজে এইটোতো জিকিব নোৱাৰিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব Congress Manipur ICC in charge Saptagiri on Monday described the prevailing law and order situation in Manipur as a very desperate and sad situation, terming the recent incidents of violence and as unfortunate. Saptagiri made the statement before proceeding to Uttarakhand at a time when reports of violence were emerging from adjoining areas. He asserted that his security is the responsibility of the government, adding that he was not personally worried despite the tense atmosphere. Questioning the political developments in the state, the Congress leader asked why a democratically elected government was removed, holding the present dispensation responsible for the deteriorating security situation. Told that they've been given only food. The children, they are not going to schools. They are in a very, very desperate situation and very sad situation. And the responsibility of my security or my team's security is with the government, is President Bush. And I'm not worried about any security threats or something like that. But it's very unfortunate. Like, why do you have President Bush if you can't solve it? Why was a democratically elected government be removed? And with that, 55 MLAs from BJP. Why is that the MLAs are given threats that they can't come to press or public? Why are they not opening up their mouth? This is very, very unfortunate. And with the public representative, they can't raise the voice of the people. Then they don't deserve to be MLAs anymore.
let there be less elections. And we are seeing our MPs, Vimoji and Uttarji, they are so vocal in parliament. Each and every issue in Manipur they are raising continuously. And it's not only these two MPs, all the MPs from India Alliance, the Congress Party and our alliance partners, even MPs from Samajwadi Party, DMK, they will raise it. NPP National Vice President I. Hemchandra, while reacting to the latest incident, said that bringing peace in Manipur remains the most important agenda at the present juncture. Describing the incident as a deep shock, Gera Jatka, Hemchandra said the development have become a major hindrance to ongoing efforts aimed at restoring peace and normalcy in the state. He added that the incident has once again raised several serious questions regarding the prevailing security situation, stating that people are worried and increasingly desperate amid recurring violence and uncertainty. शांति बहाली और सामान्य जीवन की वापसी ये मणिपुर में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर समाज और प्रशासन दोनों पहल कर रही है। पर आज सुबह की ये जो घटना है, ये एक हम सबके लिए एक गहरा झटका है, एक बड़ा चोट भी है। ये न केवल समाज और प्रशासन के प्रयासों पर एक गतिरोधक साबित तो होगा ही, लेकिन कई सवाल भी फिर से खड़ा कर रहा है। लोगों की आशंका और आक्रोश तो वही है, और उसका नजरअंदाज करना इस वक्त बहुत मुश्किल होगा। हम अपील करते हैं कि दोनों केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार, जो यहाँ पे गवर्नर जी का उनका प्रशासन है, यहाँ पे इस मामले को सख्ती और ठोस इसके ऊपर जांच की जाए और बहुत ही सख्त कदम उठाएं और इस घटना को, ऐसी घटना को दोबारा होने ना दें। और हम ये सोचते हैं कि ये नया साल जो 2026 का जो नया साल है, इसमें हम सभी मणिपुर में जो रहने वाले सभी समुदायों को, लोगों की ये एक आशा है कि हमारी सामान्य जीवन वापस आए और हमारे स्टेट में फिर से शांति बहाल हो। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज घायल हुए वो जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए, और प्रशासन की तरफ से भी उनकी देखभाल और उनकी सुरक्षा का बिल्कुल कड़ा, इस बार सख्त पुख्ता बंदोबस्त करें। BJP leader Dilip Ghosh on Monday alleged that West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is trying to stop the special intensive revision of electoral rolls out of fear of defeat. He said that exercise would be conducted across the state and would remove fake voters' names, asserting that the people of Bengal would defeat the TMC. Ghosh also said that he has resumed active organizational work on the direction of Union Home Minister Amit Shah as the BJP prepares for the upcoming assembly elections. Meanwhile, CM Mamata Banerjee wrote to Chief Election Commissioner Ganesh Kumar alleging misuse of IT systems during the SIR, including unauthorized delegation, deletion of voter names. She criticized the lack of clarity, transparency and uniform guidelines for the revision exercise. West Bengal is set to go to assembly polls in 2026. দেখলাম যে কংগ্রেস পথে নেমেছিল এসআইআর এর প্রতিবাদে। এখানে দেখলাম যে এই রাজ্যের শাসক দল পথে নামছে। অভিষেক ব্যানার্জিকে দেখলাম নির্বাচন কমিশনের দপ্তর। देखिए, ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो एसआईआर बंद करने के लिए लगी। 1 पॉइंट प्रोग्राम एसआईआर बंद करो, क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे? एसआईआर पूरा हो जाएगा तो? अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। बंगाल के लोग इस बार हराएंगे, इसलिए पूरा देश में एसआईआर हो रहा है, खाली बंगाल में नहीं है। ममता बनर्जी की नींद छुटी हुई है, वो लगातार नई चिट्ठी पत्री, गाली गलौज, भतीजा दिल्ली तक पहुंच गए हैं। लेकिन एसआईआर होगा, और यहाँ की ये जो फॉल्स नेम है, जहाँ छप्पा वोट होता है, इस बार बंद होगा। एक विधानसभा में ऑलरेडी 30, 40, 50, 60, 70 हजार तक नाम हॉर्न में ही माइनस हो गया है, और आगे भी बात होगा। जो लीड लेके टीएमसी जीता है वो इस बार माइनस हो जाएगा, और जो जाली वोट से जीतते हैं वो भी माइनस हो जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट आईसीसी टू T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच आउटसाइड इंडिया ओवर सेफ्टी कौन सा? देखेगा आईसीसी, देखेगा कहाँ करना है। लेकिन बांग्लादेश
भारत को जो बॉयकॉट कर रहा है वो भारत में खेले ना खेले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो क्रिकेट का कोई फर्क पड़ता है। Turning to developments in the regulation of artificial intelligence, BJP MP and chairman of the Parliamentary Standing Committee on Communications and IT, Nishikant Dubey, has highlighted India's provocative stance. Speaking recently, he said several countries, including the European Union and the United States, have already implemented AI regulations. He added that a committee is closely examining AI policies, noting that Prime Minister Modi has launched a major initiative and is co-chairing the upcoming World AI Summit. Ahead of the summit, the committee has convened a meeting to finalize its suggestions, which will be presented to the government. The final report is expected to be tabled during the budget session. What happened in the meeting? आज क्या रहा सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये कंट्री ने अपने छोटे मोटे रेगुलेशन बनाए हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन ने, चाहे यूएसए। हाँ जी। तो हमारी कमेटी भी चिंतित है एआई के लिए, और हाँ जी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वो को चेयर कर रहे हैं वर्ल्ड के एआई समिट का और अगले महीने से कमेटी का। हाँ जी। हमारे यहाँ मीटिंग भी होने वाली है। हाँ जी। उसी का आधार पर हमने मीटिंग बुलाई थी और हम किसी न किसी एक सजेशन के साथ जो है सरकार को पेश करेंगे और फिर सरकार जो भी निर्णय। सर कब तक रिपोर्ट पेश करेंगे आप? बजट सेशन। अच्छा, और सर जैसे अभी एक्स को लेके सरकार ने नोटिस दिया था, वो उस तरह की कोई आज मीटिंग में चर्चा हुई उस पर, या उस पर आपका? पर होगी। एक्स सरकार ने अच्छा काम किया है, सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने अक्रॉस द पार्टी लाइन सबों ने मैटी को जो है धन्यवाद दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद दिया। हमने सबसे पहले एक्टिवेट किया अपने आप को, महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा का जो है मामला हमने उठाया। हाँ जी। और उसके बाद ही पूरी दुनिया इसके पीछे आई। हाँ जी। तो हमने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। हाँ जी। और सर चैलेंजेस क्या है आईटी इसको लेके? वो अब रिपोर्ट आएगी तो। Shifting focus to Assam politics, Congress MP Prajot Bordoloi has outlined the party's unique approach to preparing upcoming manifesto. Speaking recently, he said that Assam Congress has decided to create a people's manifesto by actively consulting citizens across all sections, ethnic, linguistic, religious, cultural and economic. To facilitate this, the party has formed 5 dedicated groups, each led by senior Assam Congress leaders. Bordoloi added that consultation process launched on December 6 in Dibrugarh is now in its third phase and will conclude with a final session in Guwahati on January 10th and 11th. Assam, we decided a couple of months back that as we go for the preparation of the manifesto, we are preparing a people's manifesto. And for preparing the people's manifesto, we have decided to listen to the people of Assam, different groups, ethnic, language, religious, cultural, economic, or all other groups or individuals. We decided to listen, and that is why the Congress party has formed 5 different groups, each headed by the top leadership of the Assam Congress. And as of now, this consultation, the People's Manifesto preparing consultation, is underway in the 3rd phase, because we launched it on the 6th of December in Dibrugarh in Upper Assam. We already completed 1st phase and 2nd phase. So at the moment, as I talk to you, as of now, 5 different groups headed by the top Congress leadership. For example, our leader of opposition is heading one group. Sri Gaurav Gogoi is heading another group. Past presidents, Sri Bhupen Bora, Ripun Bora, and my colleague Sri Rakibul Hussain, they're all heading different groups, and they are fanning out to every nook and corner of the state and talking and listening, and all these interest groups are being talked to, and as many as 1,000, nearly 1,000 groups and individuals are being consulted. We have gone to markets, we have gone to different places, railway station, bus adda, we have gone to Mafusil small traders, businessmen, we have gone everywhere. And finally, this entire consultation process will culminate in Guwahati on the 10th and 11th of January. And for that, we are making preparation. Guwahati being the nerve center of the state, so that is why we have a 2.5-day schedule of consultation which will finally end in Guwahati. Thank you.
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has met Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari to review the state's road infrastructure projects. Speaking after the meeting, the CM said discussions covered all major roads, tunnel projects and initiatives related to the Char Dham pilgrimage circuit. Dhami emphasized that instructions have been given to expedite completion of all pending works, including improvements to the Gangtori Highway and construction of bypasses. He further directed that the remaining projects be completed within the next 2 months. किन विषयों पे बात हुई सर, जिससे उत्तराखंड में तमाम जो रोडों के कार्य चल रहे हैं सर? आज माननीय नितिन गडकरी, माननीय मंत्री भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, उनकी अध्यक्षता में आज उत्तराखंड की सभी सड़कों को लेकर और सभी कार्य जो टनलों के हैं, सभी परियोजनाएं जो चारधाम ऑल वेदर रोडें हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर आज विस्तृत रूप से आज उन पर समीक्षा की गई और उन सभी कार्यों को, जो कार्य अभी चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वन विभाग की जो एनओसी नहीं हुई हैं, जिन पर वन विभाग की रोक है, उनको वन विभाग तत्काल करे। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं, उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है, उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने हैं, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह पर। और जो राज्य के अंदर जिन परियोजनाओं को अभी अवार्ड नहीं किया गया है, उसे अगले 2 माह में पूर्ण किया जाए, यानी कि जो अभी अधूरे काम हैं उनको यथाशीघ्र करने के लिए कहा गया है। और जो अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों के काम हैं, ROW के काम हैं, ROB के काम हैं, उन सभी को कामों, जैसे कि श्यामपुर ऋषिकेश कर ROB बनाने के लिए भी सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है। इसी प्रकार से ऋषिकेश बाईपास है, भानियावाला जौलीग्रांट ऋषिकेश मार्ग है। इसके अतिरिक्त सभी जो ब्लैक स्पॉट हैं और जो फॉग आच्छादित स्पॉट हैं, उनका डाटा उपलब्ध करा के जल्दी ही जो है भारत सरकार को भी उपलब्ध कराना है। सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो हमारी एक्सीडेंट के लिए निर्माण समिति होती है, उनके समाधान के लिए, उस पर हमारे राज्य ने पहले भी अच्छा काम किया है। सभी सड़कों के मेंटेनेंस और जो गड्ढा मुक्त के काम हैं, वो मानसून से पहले पूरी तरह से कर लिए जाए, जिससे कि मानसून के समय में कोई दिक्कत न हो। जैसे यहाँ पर गलोगी के पास है और इसी प्रकार स्वाला है और जो हमारे क्वारब वाले हैं, इन सब स्थानों के लिए चर्चा हुई है कि इन स्थानों पर बनाया जाए। जो LA के स्तर पर हो रहे विलंब पर जल्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी सभी जिलाधिकारियों से वार्ता करके, उनकी बैठक करके उसको रिव्यू करेंगे। और जो 6 नई DPRएं प्रस्तावित हैं, उसमें देहरादून रिंग रोड है, आशा रोडी से मोहकमपुर है, 4 लेन की रोड टनकपुर सितारगंज रोड, हरिद्वार बाईपास, लालकुआ हल्द्वानी काठगोदाम बाईपास और काशीपुर सितारगंज रोड सेफ्टी के जो काम हम कामों को पूरा करने के लिए भी तत्काल उनको कहा गया है। देहरादून से लेकर मसूरी जो टनल है, उस टनल के काम को भी जल्दी से जल्दी इनकी DPR प्रस्तुत करके भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से इसमें भी सहमति मिल गई है कि जल्दी इनको स्वीकृति मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो काम पहले से चल रहे हैं, जैसे सिलक्यारा टनल है, सिलक्यारा टनल को भी दिसंबर 2026 तक पूरा करने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया। NHIDCL उसकी कार्यदायी संस्था है। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग क्षेत्र का है मामले, हमारे कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ने की जो सड़कें हैं, उन सड़कों के चौड़ीकरण, सुधारीकरण और जो नंदा राजात हमारी प्रस्तावित है, उसको लेकर भी इसी प्रकार जो BRO के पास जो सड़कें हैं, दोनों ही जो BRO के हमारे काम चलते हैं, उनकी भी समीक्षा हुई है। और कुल मिलाकर मैं भारत सरकार के आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत विस्तार से लगभग 4-4.5 घंटे की बैठक हुई है और सभी पहलुओं पर बात हुई है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड सड़क जिसका काम अंतिम चरण में है, उसको भी
जल्दी ही जो है जनता को समर्पित किया जाएगा, उसके संबंध में भी समीक्षा हुई। That's all we have for now. Keep watching HornbillTV.